أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we will be talking about the Demeter Equation, and this is a presentation that was prepared by Sonam M. Gandhi, and I am going to present it in front of you that what are the factors that are affecting the gas chromatographic analysis. So in the mid 1950s, a group of Dutch chemicals engineers began a study of the process that caused band broadening in the chromatography. 1950 में कुछ इंजीनियर्स थे, वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई बैंड ब्रॉडनिंग क्यों होती है. They derived an expression they called as the Demeter Equation, relating the height equivalent to theoretical plate to a number of experimental parameters. तो उन्होंने एक इक्वेशन जो है वो डिराइव की, जिसको Demeter Equation का नाम दिया गया. Students, as you can see that there are two type of peaks that you can see. ठीक है, एक जो है नॉर्मल पीक्स हैं जो कि शार्प पीक्स नज़र आ रही हैं आपको, लेकिन दूसरे पीक जिसमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है दैट दीज आर द ब्रॉड पीक्स. और यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके एनालाइट सैंपल है वो उसमें एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती हैं, तो आप जो एनालिसिस करते हैं उसमें एरर आता है. आपको ऐसे पीक्स चाहिए होते हैं जो कि क्या हो, जो कि शार्प हो और आपके पास जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो रही हो वो बिल्कुल अलग अलग हो. ठीक है जी. So students, we were talking about the normal and the broad peaks. So broad peaks में क्या होता है कि जो आपका एनालाइट है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है और ओवरलैपिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. मींस दैट आप जो है आपको पता नहीं चलता कि आपके सैंपल में आपके एनालाइट में कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं. ठीक है जी. तो Demeter Equation जो है उसने क्या किया, उसने डायमीटर ऑफ द स्टेशनरी फेस पार्टिकल्स को लिया, the diffusion coefficient of the solute in the stationary phase और mobile phase में दिया, और flow rate of the mobile phase को उन्होंने स्टडी किया. ये तीनों चीज़ें स्टडी की तो उनसे उनको पता चला कि इन तीन चीज़ों को अगर हम ले लें अपनी कंसिडरेशन में तो क्या होगा, जो आपकी पीक ब्रॉडनिंग है वो कम से कम होती जाएगी. ठीक है जी. अच्छा जी, this is Demeter Equation which is useful in optimizing the chromatographic performance and is expressed as below. That is HETP is equal to 2 lambda dp plus 2 nu dg divided by u plus 8 divided by pi square bracket k over 1 plus k whole square df square divided by dl into u, where u is the velocity of the carrier gas, lambda is the constant indicating the packing of the column, dp is the particle size, that is the average particle diameter, mu is the obstruction factor, dg is diffusion coefficient of the solute molecules in the carrier gas and is taken in centimeter square per second. 8 divided by pi square is the geometrical factor
pertaining to the uniformity of the liquid film thickness on the particles. K is the capacity factor, dF is the thickness of the film of the liquid phase, and dL is the diffusion coefficient of the solute in the liquid phase taken in centimeter square plus per second. ठीक है जी. Except U, all other terms in this equation are constants, so it can be simplified as HETP, that is height equivalent to theoretical plate, is equal to A plus B divided by U plus C U, where A is the eddy diffusion, B is the longitudinal diffusion, C is the mass transfer, and mu is the velocity of the carrier gas. ठीक है जी. तो अब इन टर्म्स को जो है वो हम आगे जो है पढ़ते हैं कि एडी डिफ्यूजन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन क्या है, मास ट्रांसफ़र क्या है, और वेलोसिटी ऑफ द कैरियर गैस तो आपको पता है कि ये जो आपका जो मोबाइल फेज़ है उसकी वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है जी. अब जो आपके पास कोफिशेंट ए है, इसको हम कहते हैं एडी डिफ्यूजन और मल्टीपल पाथ कोफिशेंट, एंड इज़ कंसर्न्ड विद डिफरेंट पाथ्स traveled by the molecules of a particular solute during the passage through the column. एक कॉलम से जब आपका क्या होता है, आपका एनालाइट पास होता है तो वो डिफरेंट पाथ से होके जो है वो डिटेक्टर तक पहुंचता है. ठीक है जी. अब हमने क्या करना है, इसको कम से कम करना है सो दैट आपका एनालाइट जो है वो सेम टाइम पे डिटेक्टर तक पहुंचे, तभी जो है आपके पास क्या होगा, आपका जो क्रोमेटोग्राम होगा इट विल गिव यू शार्प पिक्स और अच्छी एनालिसिस जो है होंगी. द पार्टिकल्स ऑफ द स्टेशनरी फेज मे बी इरेगुलर और मे बी स्पेरिकली शेप्ड. ठीक है जी. एंड आर पैक्ड एज टाइटली as possible, and the solute molecule must pass around them to proceed along the column. ठीक है जी. So this is a diagram. ठीक है, ये एक एनालाइट है जो कि पास हो रहा है इस कॉलम से. तो आप देख सकते हैं कि ये जो A है इसने अलग पाथ लिया हुआ है, B स्ट्रेट जो है जा रहा है, और यहाँ पर ये जो है क्या कर रहा है, आपके पैक कॉलम के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, एंड C जो है वो शार्टर पाथ ले रहा है, इसका जो पाथ है वो डिफरेंट है. तो अब आप एक में आपका एनालाइट जो है बहुत देर से पहुंच रहा है, B में आपका एनालाइट जो है डिटेक्टर तक बहुत तेज़ी से पहुंच रहा है, लेकिन C में आपका एनालाइट जो है वो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, दरमियाने रफ्तार से पहुंच रहा है. ठीक है जी. Because of the large number of possible pathways, some molecules of the same kind will reach the end of the column before others. Faster molecules found in the leading edge of the peak and slower one in the trailing edge. अब आपके पास दो किस्म के एजेस बनेंगे. एक को हम लीडिंग एज, जो पहले एज आपका आता है तो वो आपको क्रोमेटोग्राम देगा, और एक जो आपके मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो आखिर में पहुंचते हैं तो वो आपको आखिर में एक क्रोमेटोग्राम देगा. क्रोमेटोग्राम को लंबा करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर आपके पास एक टेलिंग एज आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, द नेट इफेक्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बैंड ब्रॉडनिंग. तो इसकी वजह से क्या होता है, बैंड ब्रॉडनिंग का प्रॉब्लम जो है वो बनता है. ठीक है जी. In modern chromatographic columns, which is packed with small
uniformly sized particles, the value is minimized and the contribution of this term to increasing the HETP is negligible. In gas liquid chromatography, which contains no solid particles, the value of A is 0. تو یہ آپ کی A کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے 0 ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو جی ایل سی کالم جس میں سالڈ پارٹیکلز نہیں ہوتے وہاں پر A کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ So these are two type of columns in which the blue one میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ یونیفارم ہیں, سیم سائز کے ہیں اور کلوزلی پیکڈ ہیں. تو آپ کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو انالائٹ ہے وہ یونیفارملی جو ہے اس سے پاس ہوگا اور آپ کے پاس جو پیکس ہیں وہ بالکل شارپ بنیں گے اور اس میں کوئی ٹیلنگ پیکس جو ہے وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ اس دوسرے میں دیکھیں, یہ والا جو میں آپ کو ہینڈ سے دکھا رہا ہوں, اس میں آپ کے جو انالائٹ ہے, جو آپ کے جو پیکڈ کالم ہے وہ کیا ہے irregular شیپ اگر ہو یا جو ہے وہ آپ کے پارٹیکل سائز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو, پیکنگ جو ہے وہ کمپیکٹ نہ ہو, تو آپ کے پاس ایسے پیک بنیں گے کہ اس میں ٹیلنگ پیکس آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کی جو کرومیٹوگرام کی ریزولوشن ہے دیٹ ول بی ناٹ گڈ انف. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوگا, پیک براڈننگ ہوگی اور پیک براڈننگ از پرابلم. تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے یہاں کیا کیا گیا ہے, آپ کے جو پیکڈ کالمز ہیں اس میں اسمالر سائز پارٹیکلز, اسپیریکل سائز پارٹیکلز اور کمپیکشن پروڈیوس کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جس کی وجہ سے یہ جو ایڈی ڈیفیوژن جو ہے وہ اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. Number second one, that is the coefficient B, and coefficient B represents in the longitudinal diffusion. اس کو longitudinal diffusion کہتے ہیں. And because of the concentration of the solute is lower at the edges of the band than in the center, a gradient exists, and during travel of the band through the column, solute is diffusing continually through the mobile phase away from the center of the band. When Demeter Equation میں جو دوسرا کوفیشنٹ ہے, جو دوسرا جس کی وجہ سے پیک براڈننگ ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لانگیٹیوڈنل ڈیفیوژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بیکاز دا کنسنٹریشن آف دا سلیوٹ از لوور ایٹ دا ایجز آف دا بینڈ, آپ کا جو کرومیٹوگرام بن رہا ہے اگر وہاں پر سلیوٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہے اور درمیان میں زیادہ ہے, تو کیا ہوگا, گریڈینٹ ایگزسٹ, اینڈ گریڈینٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تھرو دا کالم میں ایک گریڈینٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اینڈ دا سلیوٹ از ڈیفیوزنگ کنٹینیولی تھرو دا موبائل فیز, جس کی وجہ سے آپ کے موبائل فیز کے ساتھ آپ کا جو انالائٹ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بہہ رہا ہے from the center of the band. This phenomena occurs both at the leading and the tailing edge of the peak and contributes further to the band broadening. اور یہ phenomena جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, لیڈنگ ایج اور ٹیلنگ ایج کو میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو جہاں ہم نے پڑھا کہ ایک لیڈنگ ایج ہے, ایک ٹیلنگ ایج ہے. جو لیڈنگ ایج ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹنگ, اور جو دا ادر ون ہے دا ٹیلنگ ایج کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹیلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
तो fronting is the deformation at the beginning of the peak. It is due to the saturation of stationary phase with high quantity of component. तो इसका मतलब फ्रंटिंग किस वजह से होती है? जब आपके पास जो आपका एनालाइट है उसकी क्वांटिटी जो है वो आपके डिफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीक, इट इज़ ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ द स्टेशनरी फेज. आपके स्टेशनरी फेज सैचुरेट हो जाता है विद हायर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स. जब आपकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि ठीक है जी, तो जब आपकी एनालाइट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फ्रंटिंग हो जाता है. ठीक है जी. टेलिंग क्या होता है? टेलिंग इज़ द डिफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द पीक. इट इज़ ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ पोलरिटी फॉर अ कंपोनेंट टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज. यहाँ क्या होता है कि आपके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं उनकी पोलरिटी जो है वो सेम होती है, जिसकी वजह से टेलिंग का मसला जो है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है जी. The equation predicts that contribution to the HETP of this is inversely proportional to the mobile phase velocity. जब आपकी मोबाइल फेज वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो आपकी जो है वो टेलिंग और फ्रंटिंग ज़्यादा होगी. द इफ़ेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एट लो फ्लो रेट्स. और ये जो है अगर आपका फ्लो रेट जो है बहुत ज़्यादा लो हो तो ये टेलिंग और फ्रंटिंग जो है वो ज़्यादा होती है. Diffusion effects are more severe in GC than in liquid chromatography because diffusion coefficients are several orders of magnitude higher in the gases as compared to the liquid. तो क्या होता है, जो आपका गैस होता है वो क्या करता है, ज़्यादा फैलता है और आपका लिक्विड जो है वो उसका फैलाव कम होता है. तो इसमें जो डिफ्यूजन इफ़ेक्ट जो जीसी में है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. The contribution of longitudinal diffusion to the band broadening can be lessened by proper adjustment of the flow rates. अगर हम flow rates को ना ज़्यादा रखें ना कम रखें बल्कि ऐसे लेवल पर रखें तक जिसमें जो है वो पीक ब्रॉडनिंग जो है कम से कम हो सके, तो जो आपका की बी की वैल्यू है उसको कम किया जा सकता है. अच्छा जी, अब हम आते हैं द कोएफिशिएंट C which is included in the Demeter Equation and is contributing to the peak broadening. The coefficient C of coefficient C को हम क्या कहते हैं, mass transfer कहते हैं, and is concerned with the transfer of the solute that is analyzed between the two phases. जो दो टू फेजेस में आपका जो एनालाइट है वो क्या करता है, किस तरह मूवमेंट करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए कोएफिशिएंट C जो है वो इंक्लूड किया गया है. As the mobile phase is moving rapidly, equilibrium between the phases cannot be attained. अगर आपका मोबाइल फेज जो है वो तेज़ी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो equilibrium between the stationary phase and the mobile and the analyte जो है वो क्या होगा, वो अटेन नहीं होगा. Therefore, some solute molecules in the mobile phase are not transferred to the stationary phase quickly enough, and results are carried ahead of the center of the band. तो आपके पास यहाँ पर भी फ्रंटिंग और टेलिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो आपके जो मोबाइल आप तो ये ज़रूरी है कि there is attainment of equilibrium between the analyte and the stationary phase. तो अगर ये आपके पास कैपिलरी कॉलम है, ठीक है जी, ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है, ठीक है जी, और ये जो है क्या है, एनालाइट्स हैं, ठीक है, तो with the flow of the gas, यहाँ पर flow of the gas हो रहा है
لیکن کیا ہوتا ہے کہ فلو آف دا گیس آئدر سلو ہے یا جو ہے یہ آپ کا انالائڈ ہے اٹ از مور ایبنڈنٹ، یہ آپ کے اسٹیشنری کے فیس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ، زیادہ جو ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، یو کین سے دیٹ اس میں زیادہ پھنسا رہتا ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ پیک براڈننگ ہوگی. یا اگر یہ جو ہے اس کے ساتھ کے ساتھ ایکویلیبریم جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہا، تو کیا ہوگا، یہ ہیلیم کے ساتھ جو ہے وہ سارا کا سارا موو کرے گا، اور جب ہیلیم گیس کے ساتھ یہ سارا کا سارا موو کرے گا تو کیا ہوگا، آپ کے پاس پیک براڈننگ ہوگی. ٹھیک ہے جی. سو یہ یہاں پر ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے دیٹ دوز ان دا اسٹیشنری فیز آر ریٹین ٹو لانگ اینڈ ہینس لیگ بیک، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. In contrast to longitudinal diffusion, the contribution to the plate height of this term is directly proportional to the flow rate. Thus, to minimize the overall effect, a compromise in the flow rate is necessary. تو کیا ہوگا کہ ہمیں ایک ایسا فلو ریٹ دینا ہوگا، یعنی فلو ریٹ آف دا ہیلیم شوڈ بی سلو انف سو دیٹ جو اس چیز کی کنٹریبیوشن ہے اس کو minimize کیا جا سکے. The mass transfer effect also may be lessened by using a very thin coating of the stationary phase so that the area in contact with the mobile phase is maximized while diffusion deep into the stationary phase is reduced. An efficient GC column will have several thousand theoretical plates. یہ آلریڈی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے دیٹ گریٹر دا نمبر آف تھیوریٹیکل پلیٹس گریٹر ول بی دا ایفیشنسی، اینڈ کیپلری کالم ول ہیو این ایکسیس آف 10,000 تھیوریٹیکل پلیٹس. ٹھیک ہے جی. دس از گراف آف ایچ ای ٹی پی. تو along دا ایکس ایکسس جو ہے ایچ ای ٹی پی جو ہے وہ دکھایا گیا ہے آپ کو، اینڈ along دا وائی ایکسس آپ کے پاس along دا ایکس ایکسس لینئر ویلاسٹی or along the y-axis HDTP. This blue line represents the constant C, this represents the constant B. ٹھیک ہے جی. and the green one represents the Eddy Diffusion A. تو اگر ہم اس کا ایوریج لے لیں تو آپ کے پاس ایک پلاٹ آتا ہے the black one. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس in this case ٹھیک ہے جی کیا ہے فلو ریٹ ایچ ای ٹی پی جو ہے وہ کیا ہو اباؤٹ 0.4 ہو، اور آپ کے پاس لینئر ویلاسٹی آف دا لینئر ویلاسٹی جو ہے وہ اباؤٹ 12 سینٹی میٹر پر سیکنڈ ہو، تو آپ کے پاس بہتر ریزلٹ آ سکتے ہیں. آپ کا کرومیٹوگرام میں جو ہے وہ کیا ہوگا، آپ کا کرومیٹوگرام جو ہے وہ بہتر سپریشن کرے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تھینکس فار واچنگ دس ٹیوٹوریل. تو if you have any question you can ask me on my mobile number, or you can ask me directly. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.